Every student has a special capability. Because of this capability, three questions: what students can do, what will be their capabilities if they are taught well, and third, what students want to do. Prime Minister Narendra Modi said on Tuesday. He said that the goal of the National Education Policy was to achieve the aim of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and the aim of the National Education Policy is to make students participate in national developmental programs to make them capable. Here's more. The PM was speaking on the National Education Policy while addressing the chancellors of universities via video conferencing on the occasion of the 95th annual meet of Indian universities. The event was held by the Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad. Modi said that if students get education, their capabilities within will increase. यानी शिक्षा वो हो जो व्यक्ति को मुक्त करे, वो खुलकर सोचे, नई सोच के साथ नया निर्माण करे। उनका मानना था कि हमें अपना एजुकेशन मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड को एक यूनिट मानकर विकसित करना चाहिए, लेकिन साथ ही वह एजुकेशन के इंडियन कैरेक्टर पर, भारतीय चरित्र पर भी उतना ही बल देते थे। आप सब भली भांति जानते हैं कि हर स्टूडेंट का अपना एक सामर्थ्य होता है, क्षमता होती है। इन्हीं क्षमताओं के आधार पर स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने तीन सवाल भी होते हैं। पहला, वो क्या कर सकते हैं? दूसरा, अगर उन्हें सिखाया जाए तो वो क्या कर सकते हैं? और तीसरा, वो क्या करना चाहते हैं? एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, ये उसकी इनर स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर हम उनकी इनर स्ट्रेंथ के साथ उन्हें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ दे दें तो उसमें उनका विकास व्यापक हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज मल्टी डिसिप्लिनरी बने। हम स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं, जैसे इजी एंट्री एग्जिट और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाकर आसानी से कहीं भी कोर्स पूरा करना। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश की हर यूनिवर्सिटी को साथ मिलकर एक दूसरे से तालमेल बिठाकर काम करना ही होगा। PM on National Education Policy. Every student has certain capabilities. These capabilities pose three questions before the student and the teacher. First, what they can do. Second, what is their potential if they are properly taught. And third, what they want to do. The answer to the first question is the inner strength of the students. However, if institutional strength is added to that inner strength, their development will get expanded and they will be able to do what they want to do. PM said that the NEP is aimed at fulfilling Dr. S. Radhakrishnan's vision of education that frees and empowers the student to participate in national development. Education management should be undertaken keeping the whole world as a unit but also focusing on Indian character of education. Speaking on Atmanirbhar Bharat, Prime Minister spoke on artificial intelligence, Internet of Things, big data, 3D printing, virtual reality and robotics, mobile technology, geographical information, smart healthcare and the defense sector. Sushant Gaut for Goa 365 from Panji.